Yes, children, I'm starting exercise 11A of book R.S. Agarwal Mathematics CBSE syllabus, page number 144. Question number 1 क्या है? Find the amount and the compound interest on rupees 2500 for 2 years at 10% per annum compounded annually. Right. तो इस क्वेश्चन में पहले तुम करोगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो प्रिंसिपल क्या है 2500, रेट क्या है 10 और टाइम फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 100. 2 0 काट दो, क्या गया तुम्हारा 250. ठीक है. सो अमाउंट निकालो. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जानते ही हो, तो प्रिंसिपल तुम्हारा है 2500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 250. दोनों को ऐड करो क्या आता है बताओ 2750. दिस इज द अमाउंट, राइट. अब ये दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर this will be equal to 2750 into rate 10 into again time 1 for the second year. Don't write 2 upon 100. This is solve it. 2 0 cancel kar do. It is 275. Is it clear? So amount will be equal to principal plus simple interest. What was the principal? 2750. And the simple interest was 275. If we add these two, you will get rupees 3025. Yes, children. So compound interest is equal to A minus P. So what was your A? 3025 minus 2500. वो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है बताओ. This is 525. Is it right? So answer is 525 compound interest. Okay. Question number 5. Harpreet borrowed rupees 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. Right. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो. हरप्रीत ने 20,000 रुपये उधार लिए और 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर और टाइम 2 ईयर्स 2 साल का. तो अपने तो उसने पेमेंट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन आलम को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो देखा जाए कि हरप्रीत जो है कितना पेमेंट करता है सिंपल इंटरेस्ट पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय हरप्रीत. तो 20,000 इंटू रेट कितना है 12 टाइम 2 साल, क्योंकि वो खुद सिंपल इंटरेस्ट ही पे कर रहा है. लिखा है ना. तो 2 0 कैंसिल कर दो, कितना आ गया तुम्हारा. इट इज़ 4800. सो व्हाट इज़ द अमाउंट. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 20,000 प्लस 4800 कितना आता है 24800. राइट. दिस इज द अमाउंट पेड बाय Harpreet. Now we'll calculate amount paid by Alam. I'm talking about Alam. Right. Simple interest paid by Alam for the first year. $20,000 into rate into 1 divided by 100. 2 0 काटो, कितना आया
2400 आ गया, राइट. सो विल फाइंड द अमाउंट पेड बाय आलम फॉर द फर्स्ट ईयर. अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सो 20,000 प्लस 2400 is equal to will become the principal for the next year. So simple interest for the second year is equal to 22400 into 12 into 1 divided by 100. So 20 cancel, it is coming as 2688. Clear? Now amount will be equal to 22400 plus 2688. कितना आएगा 25088. Right. So this is the amount paid by Alam, right? And 22400 amount was paid by, I'm sorry, 24800 was the amount paid by Harpreet. So find out the gain. Gain is equal to 25088, yes, minus 24800. This will be equal to how much? 882. So rupees 288 is the gain. Clear? Okay. Yes, student, question number 6. Manoj deposited a sum of rupees 64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at 7.5% per annum. What amount will he get on maturity? वही सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. तो प्रिंसिपल तुम्हारा हो गया 64,000 हो गया, राइट. और देखो टाइम 3 इयर्स है और रेट तुम्हारा 15.2% हो गया और तुम्हें अमाउंट निकालना है. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालो. Simple interest for first year is equal to 64,000 rate 15/2 और टाइम फर्स्ट ईयर. तो इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आता है 4800. क्लियर? अब तुम अमाउंट निकालोगे इज इक्वल टू 64 प्रिंसिपल प्लस सिंपल जानते ही हो. 54,000 प्रिंसिपल हो गया और 4800 तुमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट, वो ऐड कर दोगे. तुम्हारा आता है 68800. This amount. Now this amount will be the principal for the next year. The simple interest for the second year is equal to 68800 into rate 15/2 into 1. So ये कितना आता है 5160. Clear? So amount is equal to 68800 plus 5160. How much it is? 73960. Clear? This is the amount. अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर $73960 into rate 15/2 time 1 for the next third year. We will solve it. It is coming as 5547. Clear? 5547. So then amount is equal to 73960 plus 5547. कितना आएगा
79507. Question number 7. Divakaran deposited a sum of rupees 6250 in the Allahabad Bank for 1 year compounded half yearly at 8% per annum. Find the compound interest he gets. So first of all, note it down. Principal is 6250. Clear? Rate is 8% per annum. Since it is compounded half yearly, सो रेट हमारा आधा हो जाएगा, मतलब 4% पर हाफ ईयर. क्लियर? और टाइम मेरा है 1 ईयर. तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 2 हाफ ईयर्स. 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स यानी कि 2 हाफ ईयर्स. क्लियर? यानी रेट को मैंने आधा कर दिया और टाइम को देखो डबल कर दिया. क्लियर? उसी प्रोसेस से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. इज इक्वल टू 6250 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100. कितना आया? 250. राइट? सो अमाउंट निकालो. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6250 प्लस 250 is equal to 6500. Right? Now this amount will be the principal for the next half year. Is equal to 6500 into 4 into 1 divided by 100. Solve it. It is coming as 260. Clear? Now what is the amount? 6500 plus 260. How much it is? 6760 is the amount. So finally, what is the compound interest? A minus P. Amount is 6760 और ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था मेरा? याद करो 6250. इतने उधार लिया था ना, सो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. इट इज कमिंग एज ₹510 इज द आंसर. Yes, children, question number 8. Michael borrowed rupees 16,000 from a finance company at 10% per annum, compounded half yearly. What amount of money will discharge his debt after 1.5 years? ये भी half yearly ही है, right? So simple. What is the principal given to us? This is 16,000. Clear? Rate is 10% per annum. लेकिन ध्यान रखो ये हाफ ईयरली है, तो इसका आधा करो 5% पर हाफ ईयर. Is it clear? Time, how much they are giving? 1.5 years. That means 3/2 years. तो इसको मैंने बताया था, डबल कर दो. 3/2 into 2, 2 cancel. This is 3.5 years. Clear? I will calculate the simple interest for the first half year. For first half year is equal to 16,000 into rate is 5% per half year time 1 first half year divided by 100. How much are you getting? 800 rupees. So we'll find the amount. Amount is equal to 16,000 plus 800. कितना आता है? 16,800. This is the amount for the first half year. Now find out the simpleness for the next half year.
for second half year is equal to 16800 into 5 into 1 divided by 100. How much is coming? 840. ठीक है, तो amount is equal to principal plus simple interest, that is 16800 plus 840 कितना आता है? 17640. right? Now I will calculate simple interest for the third half year. Is equal to 17640 into rate is 5 into 1 divided by 100, it is 882. So we have to find the amount. So amount is equal to principal plus simple interest, that is 17640 plus 882. It is coming as 18522. This is the answer. Okay, so in this way this exercise is finished. मैंने सेकेंड थर्ड फोर्थ छोड़ दिए क्योंकि वो एक ही ढंग के सवाल है, आप लोग अपने आप से कर सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक.